Hello friends, I am Aditya and you are watching German class. So this is again the next series that we are already started for testing your level B1 or B2. So it is for your level testing. So there are some questions I have prepared for you. So you can write the correct answer in the comment. आप करेक्ट आंसर कमेंट में लिख सकते हो, फिर उसके बाद मैं आपको आंसर बताऊंगा. तो जल्दी से आपको अगर पता है तो क्वेश्चन का आंसर ए बी सी या 1 2 3 जो भी करेक्ट ऑप्शन है एमसीक्यू क्वेश्चन से ही, इससे आप अपना लेवल टेस्ट कर सकते हो इफ़ यू आर इन B1 और इन B2. सो दिस इज़ वेरी वेरी knowledgeable video for all the German learners. So please watch till the end and give me your feedback also. So we start with the first question of the day. Blank denkst du Tobias an meinen Onkel? So this is the answer here. This is the answer, and the question. This is the question. Denkst du Tobias? So what is the correct answer? Correct answer आपको बताना है. Option 1, 2 or 3. So write your answer in the comment. Okay, some people are writing. All right, so now I will tell you the answer. The correct answer is option 2. An wen denkst du Tobias? What are you thinking about? An meinen Onkel. Because Tobias is thinking about his uncle, which is a person, human being. So we start with the preposition and this is accusative, so wen. An wen denkst du. So this is the reason why we have chosen option 2. Next question. Heute habe ich frei. Then blank. Gehe ich zum Supermarkt. You need to fill up the blank. Option 1, 2 or 3. Please write your answer in the comment quickly. So some people are writing. Then I will tell you after 2 seconds. Alright. So the correct answer is option 1. Darum. Darum means therefore. That is why. You can also use deshalb. Okay. Heute habe ich frei, darum gehe ich zum Supermarkt. Today I have free, therefore I am going to the supermarket. आज मैं free हूँ इसलिए मैं supermarket जा रहा हूँ. So option 1 is the correct answer. Move on to the next question. Der Sprachkurs ist nicht nur billig. Blank, auch interessant. What is the correct answer? 1, 2 or 3 option. Write your answer in the comment below. Hurry up, quickly. There are many people who are very very quick, very fast, and they are very hard working students, very hard working learners. बहुत हार्ड वर्किंग लर्नर्स भी है कुछ हमारे चैनल पे, जो क्विकली वीडियो का वेट करते हैं और जल्दी से आंसर भी लिख रहे हैं अभी. तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3. ऑप्शन 3 इज़ द करेक्ट आंसर. देयर Sprachkurs ist nicht nur billig, sondern auch interessant. इट्स ए zweiteilige कनेक्टर. ये कनेक्टर है nicht nur sondern auch. तो ऑप्शन 3 sondern. The language course is not only cheap but also interesting. Option 3 is the correct answer. This is the connector. So मैं आपके लैंग्वेज टेस्ट कर रहा हूँ. प्रेपोजिशंस हैं, रिलेटिव्स आर्ट्स हैं, मोडाल वर्ब है, कनेक्टर्स हैं, सभी तरह से सब तरफ से आपकी लैंग्वेज टेस्ट की जा रही है. फ्रॉम ऑल द वे आई एम टेस्टिंग योर नॉलेज. आई एम आस्किंग क्वेश्चंस बेस्ड ऑन प्रेपोजिशंस, कनेक्टर्स, मोडाल वर्ब, परफेक्ट टेंस, प्रेटेरिटुम टेंस, फ्रॉम ऑल द वे to train you in German so that you can have a very good command over the language. Now move on to the next question. Die Arbeit blank. Arztes ist sehr kompliziert. Das, der or den. Option 1, 2 or 3. Hurry up, quickly write your answer in the comment below. So अगर आप कमेंट में आंसर लिखोगे तो दूसरे स्टूडेंट्स हैं उनको भी हेल्प मिलेगी. बाद में जो वीडियोस देखेंगे लोग तो वो भी कमेंट में करेक्ट आंसर देख सकते हैं. If somebody knows the reason, you can also give the reason explanation below. बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हैं, हार्ड वर्किंग हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टूडेंट्स हैं, बहुत क्यूरियस रहते हैं सीखने के लिए, तो वो नीचे एक्सप्लेनेशन भी देते हैं कि वाई ऑप्शन 1, वाई ऑप्शन 2 करेक्ट. सो दिस इज़ वेरी गुड एंड वेरी वेरी इन्फॉर्मेटिव फॉर अदर स्टूडेंट्स ऑल्सो. तो करेक्ट आंसर बताते हैं. नाउ द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1. दे आर बाइट डेस आर्टेस. द वर्क ऑफ द डॉक्टर इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड. दिस इज कॉल्ड गेनेटिव केस. गेनेटिव डेयर चेंजेस इनटू डेस or Arztes, es ending. The work of the doctor is very complicated. So option 1 is the correct answer. Next question. Ich lasse blank mein Auto reparieren. 1, 2 or 3. What is the correct answer? Ich lasse blank mein Auto reparieren.
What is the correct answer? Do you think, is there any correct option will be there? If you think option 1 means nothing will come, this sentence is complete in itself, you can choose 1. If you think option 2, then you can write 2, or if you see option 3, you can write option 3 in the comment below. Alright, the correct answer is option 2, mehr. Ich lasse mehr mein Auto reparieren. Ich lasse mein Auto reparieren. Ich lasse mein Auto reparieren. So correct option is 1. Nothing will come here. Yes, by mistake I said mehr, but the correct answer is 1. Nothing will. I let my auto repair means I have not repaired myself. I cannot repair myself, so I need someone else. I need the help of somebody else. So therefore the option 1, nothing will come. I let it. It means I get my car repaired. In English the structure is like I get my car repaired. So this is called ich lasse mein Auto reparieren. Lassen work as a modal verb. In the last we use infinitive form with lassen. So this is the beauty of this verb lassen, means to let. हिंदी में कैसे बोलेंगे कि मैंने अपनी कार रिपेयर करवाई, मैंने खुद रिपेयर नहीं करी, मैंने किसी और से करवाई है, तो हम यहाँ पे लासन वर्ब यूज़ करेंगे. कोई भी काम जो आप खुद नहीं करते हो, किसी और से आप करवाते हो, जैसे अपने हेयर कट करवाना है, अपनी कार रिपेयर करवानी, अपने मोबाइल रिपेयर करवाना, वॉशिंग मशीन रिपेयर, समथिंग विच यू कैन नॉट डू, तो हम लासन वर्ब यूज़ करेंगे. Now move on to the next sentence. Das Wasser ist nicht blank. You have to write the correct option 1, 2 or 3. The water is not. Yes, correct option is 3. The water is not drinkable. Trinkbar. Trinkbar means drinkable. The water is not drinkable. Nicht trinkbar. So trinkbar is the correct answer. Next question. Alles blank. Du sagen willst ist mir nicht klar. Option 1, 2 or 3. Read the question carefully. Read the question 2 times, 3 times unless you understand. क्वेश्चन को बार बार पढ़ो. जितनी बार पढ़ोगे उतनी बार आपको अंडरस्टैंडिंग होगी. जितनी बार क्वेश्चन को रिपीट करोगे उतनी बार आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी. सो रीड द क्वेश्चन अगेन एंड अगेन and write the correct answer in the comment below. Correct answer is option 3. Alles was du sagen willst ist mir nicht klar. All what you want to say is not clear to me. This is also relative Satz. This is also relative Satz. Because of alles we have used was. Because of alles we are using here was, which is relative pronoun. Next sentence. Die Stadt in blank. Mia wohnt ist sehr teuer. The Stadt in which Mia lives, the city in which Mia lives is very expensive. This is relative Satz. Relative sentence ही आपको correct answer बताना है. Article use करना है. What is the correct article? Der, die or den? Correct answer is option 1, der. This is dative sentence. In der, the city in which. They start in der Mia want. Start D होता है and dative D changes into der. So option 1 is the correct answer. काफ़ी लोग हैं जो बहुत अच्छे से आंसर कर रहे हैं, बिल्कुल सीरियसली देख रहे हैं वीडियोस को. तो दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी हेल्पफुल इन ए लार्ज वे, इन ए वेरी बिग वे फॉर ऑल द लर्नर्स. एंड आई वॉन्ट योर फीडबैक इन द एंड. Please write your feedback. How do you like this video and what kind of videos you want to see in the future? Because this channel is purely dedicated to all the German learners, whether beginners, advanced learners. Next sentence. Was blank du machen. This is very simple sentence. I hope all of you will be able to give the correct answer. I don't think is there anyone who does not understand this statement or this question. Option 3 is the correct answer. Was willst du machen. Willst means want. What do you want to do? So you need to see the conjugation also. ST ending do. Was willst du machen. What do you want to do? Ich habe mich noch nicht dash den Job entschieden. I have not yet decided
for the job. So write the correct answer. This is the fixed preposition. You should know what is the fixed preposition with the verb entschieden. sich entschieden के साथ कौन सी preposition आती है फिक्स? अगर आपको पता है तो आप बहुत आसानी से इस सेंटेंस का आंसर लिख सकते हो. The correct answer is option 2, für. Ich habe mich noch nicht für den Job entschieden. I have not yet decided for the job. मैंने अभी तक जॉब के बारे में डिसाइड नहीं किया है, जॉब के लिए अभी तक डिसीजन नहीं लिया है. नेक्स्ट सेंटेंस, man soll in Betracht blank. अब ये फिक्स वर्ब है, वर्ब विथ फिक्स प्रेपोजिशन, फिक्स नाउन, नाउन और वर्ब का कॉम्बिनेशन है. बहुत अच्छा स्ट्रक्चर है, बहुत अच्छा तरीका ये वोकेबलरी इंप्रूव करने का. अगर आपको जितने ज़्यादा नाउन वर्ब कॉम्बिनेशन याद होंगे उतनी ज़्यादा आपकी जर्मन इंप्रूव होगी. यहाँ पे आपको करेक्ट वर्ब लिखनी है, जो कि बेत्राक्ट के साथ करेक्ट वर्ब कौन सी आएगी, 1, 2 और 3. करेक्ट फॉर्म लिखनी है. करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1, CN. इन बेत्राक्ट CN मीन्स कंसिडरेशन. मान सोल इन बेत्राक्ट CN, वन शुड टेक इनटू कंसिडरेशन. किसी चीज़ को कंसीडर करना, कंसिडरेशन में लाना, दैट इज कॉल्ड इन बेत्राक्ट CN. तो आज की वीडियो में इतना ही. दैट्स ऑल इन दिस वीडियो. थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग अस, कीप सपोर्टिंग, कीप लाइकिंग. अगर आपने लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करना. सी यू नेक्स्ट टाइम इन द न्यू वीडियो विथ सम मोर इंटरेस्टिंग कंटेंट. बाय बाय, टेक केयर.